चलो अब डिस्कस करते हैं द रीजन्स ऑफ द ब्रेन. ओके, दैट आर द लोकेशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन और द divisions of the brain. Okay, so the regions of the brain is divided into three parts. Okay, now those are the forebrain, the midbrain and the hindbrain. तो नाम सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है कि फोरब्रेन मतलब सामने का पार्ट, मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला पार्ट और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला पार्ट ब्रेन का. ठीक है ना. तो द फोरब्रेन, that is the region of the forebrain, consists of the cerebrum and the diencephalon. Okay, now diencephalon क्या होता है? Now diencephalon consists of two structures which are the thalamus and the hypothalamus. thalamus कुछ यहाँ पे होता है. ठीक है. So thalamus का function क्या होता है? It release the sensation of pain and pressure to the brain. ठीक है. अगर कोई पेन और प्रेशर का फीलिंग हो, सेंसेशन हो, तो वो वाला सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस. नेक्स्ट कम्स द हाइपोथैलेमस व्हिच इज अ लेयर जस्ट बिलो द थैलेमस. ओके, नाउ हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? सबसे पहले तो इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. नाउ हाइपोथैलेमस contain a very important structure which is known as the pituitary gland. ठीक है. तो what is the function of the pituitary gland? The pituitary gland secretes or controls all the important glands which secretes hormones. Okay, तो वो हार्मोन के बारे में हम तो हार्मोन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जो अभी के लिए सिर्फ इतना जान के रखो कि जो हार्मोन्स का हेड होता है और जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हेड होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में होता है. ठीक है. तो हाइपोथैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट कम्स द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा एक टिब्यूलर टाइप का स्पेस होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, जो कि सिर्फ रिफ्लेक्सेस ऑफ द आइज एंड ईयर्स कंट्रोल करता है. ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका नहीं है, ऑल्दो रिफ्लेक्स ऑफ द आइज एंड ईयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अ मेजर वन. राइट. नेक्स्ट कम्स द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द cerebellum, the pons and the medulla oblongata. Okay, now cerebellum का फंक्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं. दैट इज इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी functions, that is the now cerebellum का function तो हम पढ़ ही चुके हैं. that is it controls the body balance and all the muscular, that is the involuntary activities. now medulla oblongata का भी हम पढ़ चुके हैं. that is it controls the movement of the internal organs, that is तो फिर respiration या फिर digestion and body's peristalsis, all is controlled by this medulla oblongata. ठीक है. स्लीप साइकिल भी मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंट्रोल करता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉन्स? ये वाला टर्म तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा. तो पॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देख लेते हैं. ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर इधर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉन्स? नाउ द पॉन्स कैरीज a sense the nerve impulses across both the cerebral hemisphere. that is जो cerebral hemisphere का left hemisphere होता है and the right hemisphere होता है, तो उन दोनों के बीच तो corpus callosum होता है ना, एक barrier टाइप का. तो वहाँ पे impulses कैसे conduct होता है? तो उसके थ्रू जो impulses conduct करता है वो है pons. ओके, गुड. नाउ इसके साथ हम हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड द रीजन कंप्लीट करते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन विद द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा बेसिक हम जानते हैं. तो द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड विद द मेनिंजेस. वो जो 3 पार्ट्स था ना, वो जो ड्यूरा मैटर, द एराक्नोइड एंड द पिया मैटर, वो स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है. ठीक है. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड हैज अ सेंट्रल canal as a cavity, okay, that runs throughout the length of the spinal cord, and that cavity is filled with the cerebrospinal fluid. Now cerebrospinal fluid का क्या काम होता है? That is it absorbs the shocks, acts like a cushion and protects the spinal cord. Okay, वो जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करता है.
Another interesting thing is that brain के वक्त हमने पढ़ा था that the outer part of the brain is covered by the gray matter and the inner part of the brain was covered by white matter. But spinal cord के बाद time पे things are opposite. Okay, what is that? That is the inner part of the spinal cord is covered with gray matter and the outer part is the white matter. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है जब स्पाइनल कॉर्ड का हम जो सेक्शन करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, तब हमको दिखता है दैट इज द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई. एक्चुअली में बटरफ्लाई तो नहीं होता, वो जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के साथ होता है ना, तो दैट ग्रे मैटर लुक्स लाइक द बटरफ्लाई. ओके, गुड. Next comes the functions of the spinal cord. Now, what is the function of the spinal cord? The spinal cord का function, main function होता है, it deals with the reflexes. Okay, तो जो neck portion के नीचे का जो पूरा part होता है, उसका जो reflexes होता है, that is controlled by spinal cord only. वहाँ का impulses brain तक नहीं पहुँचता. जो डायरेक्ट मतलब जो अगर कुछ गर्म चीज़ में हमने हाथ लगा दिया तो हम छट से हाथ उठा लेते हैं, right? तो that is called reflex. And that reflex is controlled by the spinal cord. Okay, good. Now it also conducts the sensory impulses from the skin to the brain. Okay, and the motor impulses from the brain to the brains. That is, spinal cord एक चैनल की तरह काम करता है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और ब्रेन का इंफॉर्मेशन हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. ठीक है, तो इसी के साथ हम स्पाइनल कॉर्ड का भी डिस्कशन खत्म करते हैं. Next, we will move on with the ANS and the PNS, that is the peripheral nervous system and the autonomic nervous system and the somatic nervous system. SNS or the somatic nervous system, which is one of the part of the peripheral nervous system. Okay, now the somatic nervous system or the SNS consists of two parts: the cranial nerves and the spinal nerves. Now, cranial nerves are all the nerves that are present at the facial region. Okay, now those are 12 pairs. ठीक है, 12 pairs of cranial nerves होता है टोटल में, जो कि डायरेक्ट, that is the nerves which are directly connected with the brain. स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसका कनेक्शन नहीं होता. तो that are divided into three parts. That is the sensory part. The sensory part of the sensory nerves of the cranial nerves are those that are the olfactory, which is with the nose, with the optic, which is connected with the eyes, and the auditory, which is connected with the ears. Next, it consists of the motor nerves. Now, these motor nerves are the nerves that sends impulses to the eye muscles, which leads to the movement of the pupil of the eyes, right? Next comes the mixed nerves. Now, these mixed nerves are also present in the region of the face and the tongues. That is, वो sensory की तरह भी काम करता है और मोटर की तरह भी काम करता है, राइट? जो टेस्ट हम रिसीव करते हैं, दैट इज एक्टिंग एज अ सेंसरी वन, एंड वी आर टॉकिंग, दैट इज वी मूविंग द टंग, वो मोटर नर्व की तरह काम करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कम्स द स्पाइनल नर्व्स. द स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ 31 pairs. 8 of the pairs are present in the neck region, 12 in the thorax or the thoracic region, that is the upper back part, 5 in the lumbar part, which is the middle part of the back, 5 in the sacral part, that is the almost at the end of the back, and 1 pair in the coccygeal region, that is the end of the vertebral column or the spinal cord. Okay, good. And these spinal nerves are directly not connected with the brain. These spinal nerves are first connected with the spinal cord. That is, if the impulses are brought, it is first brought to the spinal cord, then it is moved on to the brain. Okay, so cranial nerves are those which are directly connected with the brain, and spinal nerves are those which are connected with the spinal cord. Okay, good. Next, we need to know something about the spinal nerves. Those are, that is, it originates from two roots. Those are the dorsal roots and the ventral roots. Okay, now the part where the dorsal roots originates, it is ovoid dorsal ganglia is present there. Okay, and these dorsal root are the part which contains the
sensory nerves. The ventral root instead contains the motor part. That is, it contains the motor nerves. Okay. Now, which means that the spinal nerves are mixed nerves. That is, it controls of the sensory nerves as well as the motor nerves. Next comes that both these roots, that is the dorsal root and the ventral roots, enters the gray matter. Okay. तो जब वो एंटर करता है तो इट फॉर्म्स अ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर. जो मैं बता रही थी बटरफ्लाई, तो ये जो एंड्स होता है इट फॉर्म्स द हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, समझ गए होंगे क्लियरली. मूव ऑन विद द ANS or the autonomic nervous system. Now, autonomic nervous system is divided into two parts, which is the sympathetic and the parasympathetic. Now, what is the sympathetic part is present from the spinal cord, from the neck region to the waist region. And the parasympathetic part कौन सा होता है? It is anteriorly in the head part and posteriorly in the sacral part. Okay. So now this parasympathetic and sympathetic nervous system is controlled by the hormone called the adrenaline. ठीक है, adrenaline is the hormone which helps in the fight or flight situation, that is in the emergency situation. ठीक है, जो हमारा actions reactions है वो control करता है. These autonomic nervous system which is in turn controlled by the adrenaline. ठीक है, तो adrenaline के details के बारे में हम endocrine gland वाला chapter में पढ़ेंगे. ठीक है. Now parasympathetic and sympathetic nervous system का function बिल्कुल opposite होता है. ठीक है, सपोज जब हम डर जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत एक्साइटेड होता है तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है. तो वो हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इट reduces the heart autonomic nervous system. Now, autonomic nervous system is divided into two parts, which is the sympathetic and the parasympathetic. Now, what is the sympathetic part is present from the spinal cord, from the neck region to the waist region. And the parasympathetic part कौन सा होता है? It is anteriorly in the head part and posteriorly in the sacral part. Okay. So now this parasympathetic and sympathetic nervous system is controlled by the hormone called the adrenaline. ठीक है, adrenaline is the hormone which helps in the fight or flight situation, that is in the emergency situation. ठीक है, जो हमारा actions reactions है वो control करता है. These autonomic nervous system which is in turn controlled by the adrenaline. ठीक है, तो adrenaline के details के बारे में हम endocrine gland वाला chapter में पढ़ेंगे. ठीक है. Now parasympathetic and sympathetic nervous system का function बिल्कुल opposite होता है. ठीक है, सपोज जब हम डर जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत एक्साइटेड होता है तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है. तो वो हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इट reduces the heart beat. Okay. नेक्स्ट, सपोज इन द ब्लड वेसल्स, जब हम बहुत एक्साइटेड होता है, डर जाता है, या फिर कोई भी कंडीशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या दैट इज द वो किस लिए होता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है वो और नैरो हो जाता है. ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो दैट वो बढ़ाने वाला काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और फिर से वो वेसल्स को डायलेट करके, लूमेन को ब्रॉडर करके, जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में लाता है, वो लाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. सिमिलरली लंग्स, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम बहुत जल्दी सांस लेते हैं, राइट. तो वो काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्यों, क्या करता है, वो जो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स का जो ल्यूमेन होता है उसको बढ़ा देता है. ठीक है. एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, फिर से हमारे ब्रीथिंग को नॉर्मल कंडीशन में लाता है. सिमिलरली द प्यूपिल ऑफ द आई, जब हम एक्साइटेड होता है या फिर आंखों में बहुत लाइट गिरता है तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, डायलेट हो जाता है. जैसे कोई बोलता है ना कि देखो कैसे आंखें बड़े बड़े करके देख रहा है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जब फिर से प्यूपिल को नॉर्मल कंडीशन में लाना हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द parasympathetic nervous system. So usually sympathetic ones are the negative ones, जो
तो शरीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथिक वंस आर द वंस व्हिच ब्रिंग्स बैक द फंक्शंस ऑफ एवरी बॉडी पार्ट्स टू द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ओके, नाउ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं नोट्स के साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट also controls the emotions, that is the grief, anger, pain, whatever it is, all the emotions are controlled by this autonomic nervous system or the sympathetic and the parasympathetic nervous system, ठीक है। तो इसके साथ हम ब्रेन के और द नर्वस सिस्टम के जो डिविजन है सब डिस्कशन खत्म करते हैं, ठीक है। ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट व्हिच इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। तो हम अब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और विद दैट रिफ्लेक्स एक्शन वी विल एंड दैट चैप्टर, ओके। गुड, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट reflex action and the reflexes, right? So it deals with the voluntary and involuntary actions of the body, right? Now, voluntary actions means that if someone talks to us, then we respond in return. That is a voluntary action. That is from our conscious mind. But there are some functions which are known as the involuntary actions, which we do not control. Suppose if something gets in our nose, we tend to sneeze, or if something obstructs in our throat, we tend to cough, right? That is our involuntary action. वो अपने आप ही होता है, right? हम तो करते नहीं है। तो these involuntary actions are only known as the reflexes, right? Now these reflexes are of two types. Those are the natural or the inborn reflexes and the conditioned or the acquired reflexes. Now let us talk about natural or inborn reflexes first. Okay? Suppose blinking our eye, or sneezing, coughing, or crying when we get hurt. These all are इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, राइट। जब से हम छोटे से तब से करते आ रहे हैं ये सब, किसी को उनको सिखाना नहीं पड़ा, राइट। बट conditioned or acquired reflexes, something we learn while growing up. These are the reflexes which are taught to us or which we acquire while growing up, right? Suppose if a teacher enters our room, then we tend to say good, stand up and good morning, right? Now that is a conditioned reflex. That is not a natural reflex. Let us take an example of the Pavlov's experiment. Now, Pavlov's experiment में क्या था? There was a scientist named Pavlov who had a dog, right? And the dog used to salivate whenever the bell was rung. Now, bell ring करने की वजह से कौन से dog का salivation होता है, right? नहीं होता। क्या किया था उन्होंने? बेल बजाने के साथ उन्होंने हर बार उस डॉगी के लिए खाना लाया, ठीक है। तो उस खाने को देख के वो डॉगी सेलिब्रेट करने लगा, ठीक है। तो जब वो खाना हटा के, मतलब कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने वो खाना हटा दिया और सिर्फ बेल को रिंग करने लगा, तो डॉग को क्या लगा कि ज़रूर फूड ही आया होगा, राइट। तो उसके वजह से डॉग का सेलिब्रेशन होने लगा, इवन विदाउट द फूड, राइट। Now that is a example of conditioned reflexes, right? Now वो salivation reflex की तरह काम करता था जब भी वो बेल बजता था, ठीक है। Okay. Now let us move on with the pathway of the reflex action or the reflexes. Now हम सबको पता है जो भी impulse carry होता है वो brain के थ्रू होता है, ठीक है। तो reflex action हो सकता है कि brain तक ना भी जाए, वो कभी-कभी spinal cord से होके भी सिर्फ काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स, मतलब अगर हमारा जो नी है कहीं हर्ट हो जाए तो हम अपना नी हटा लेते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेशन फील होता है, राइट। या फिर कुछ गर्म चीज़ को हम हाथ लगा लेते हैं तो हम हटा लेते हैं हाथ, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो फिर कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। सो द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन और द रिफ्लेक्सेस आर, फर्स्ट there is a stimulus. Obviously it can be thermal, electrical, chemical, whatever stimulus it can be, or by touch, anything. So after the stimulus is received by the receptor muscle or the receptor tissue, that impulse is carried by the sensory neuron. Then the impulse is transferred to the dorsal ganglion of the dorsal root, okay. Then it enters the CNS, that is the central nervous system. It can be in the spinal cord also, or it can enter the spinal cord and then to the brain, okay. If not brain, it can directly travel through the spinal cord. Then CNS के बाद it travels to the ventral root.
ओके, फिर वेंट्रल रूट के बाद इट मूव्स ऑन टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्सेस को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक कैरी करता है। तो मोटर न्यूरॉन से वो वाला इम्पल्स या फिर रिफ्लेक्स इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है और रिफ्लेक्स काम करता है। ठीक है, नाउ ऑल दीज हैपन विद इन अ फ्यू मिलीसेकेंड ओनली, वरना तो वो रिफ्लेक्स नहीं कहलाता ना। तो फिर दिस इज द पाथवे ऑफ द reflex action. Now what is the reflex arc? Now reflex arc are the shortest route of a reflex action. मतलब ये जो मैंने पाथवे दिखाया है वो डायरेक्टली होता है। ठीक है, मतलब स्टिम्युलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से सीएनएस, सीएनएस से मोटर, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टिव और इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ अ दैट द रिफ्लेक्स एक्शन कैन टेक प्लेस। ओके, सो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन आर्क भी डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शंस भी है जो थोड़ा सा रिफ्लेक्स आर्क से ज़्यादा टाइम लगाता है। जैसे सपोज स्टिम्युलस हमने कुछ और जगह रिसीव किया और इफेक्ट कुछ और जगह हुआ। ठीक है, तो सपोज वी हैव टच्ड hot object or we have saw something very fearful, right? तो हमारा प्यूपिल, आई का प्यूपिल डर की वजह से डायलेट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो so with this discussion of this reflex action we end our chapter, that is the nervous system. I hope you have clearly understood all the concepts whatever I have discussed. I will also attach some examples in the notes and I hope तुम लोगों को कोई difficulty नहीं हुई है समझने के लिए। So okay, so yeah, with that we end this and thank you for coming.